Hey, hi, hello, and welcome to Chhaya Writes. This is my first video of my YouTube channel. ये वीडियो मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज दिस वीडियो विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन माय फर्स्ट बुक दैट इज़ मेस्मराइजिंग वर्ल्ड ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. तो इसे हम एक तरीके का बुक रीडिंग काइंड ऑफ वीडियो भी बोल सकते हैं बिकॉज आई विल बी गिविंग यू a glimpse of what is there in this book, mainly related to the contents and the titles or what efforts I have put into this book creation. और ये बुक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इसमें मैंने पूरा एफर्ट्स लगाए हैं. इट इज़ मेनली अ सेल्फ पब्लिश्ड बुक, यू कैन से इट. तो इसमें सेल्फ एडिटिंग हो गया है. राइटिंग तो ऑफ कोर्स ऑल द स्टोरीज आर प्योरली रिटन बाय मी एंड इट इज़ अ सेल्फ पब्लिश्ड बुक. तो ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, मैंने क्या क्या एफर्ट्स डाले हैं इसमें और इस बुक में क्या क्या स्टोरीज है, तो एक काइंड ऑफ बुक रीडिंग करने का मैंने सोचा है. तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स बिगिन. जैसे मैंने अभी कहा आपको कि ये बुक मेरा फर्स्ट बुक है एंड इट इज़ अ सेल्फ पब्लिश्ड वन. इसे अगर आपको परचेज करना है, बाय करना है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजोन. और जो ई बुक प्रिफर करते हैं तो फॉर देम दिस बुक इज़ अवेलेबल ऑन अमेजोन किंडल. अगेन यू विल फाइंड इट ऑन द गिवन लिंक. अमेजोन का जो है डिस्क्रिप्शन में. मेस्मराइजिंग वर्ल्ड ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. इस बुक में एक्चुअल में क्या है, ये बहुत सारे लोग मेरे से भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या स्टोरीज है, क्यों हम ये बुक परचेस करें. तो मैं सोचा एक छोटा सा सेशन ले लेते हैं जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत वट एवर आई हैव रिटन मैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करूँगी एंड लेट्स सी इफ द कंटेंट अट्रैक्ट्स यू. तो you can go ahead and click on the link mentioned in the description. So as you can see, this is the cover page जो obviously मैंने self publish हुआ है तो I have selected it and इसका title and the way it is written ये सब it's my choice on the site. The first page that comes is the title of course and it is signed by me. Next page is the dedication page. So I dedicate this book to my family, friends who stood by me throughout my writing journey. So if I open the next page, यहाँ पे contents दिए हुए हैं. You can see there are 7 stories. अब ये 7 क्यों है, 10 क्यों नहीं है, 11 क्यों नहीं है, इसके लिए एक छोटा सा बैक स्टोरी है विच आई कैन डिस्कस हियर. बिकॉज इनिशियली मैंने बहुत सारी स्टोरीज को शॉर्टलिस्ट किया था फॉर माय फर्स्ट बुक, बट आफ्टर गोइंग थ्रू द डिटेल रिविजन ऑफ द बुक आई कैन से आई हैव टू और आई वाज फोर्स्ड टू कैटेगराइज इट इनटू 2 sections. देयर वर फ्यू स्टोरीज जो एक कैटेगरी में फिट होती थी एंड देयर वर फ्यू अदर स्टोरीज जो दूसरी कैटेगरी में फिट हो रही थी. सो फॉर दोज डिफरेंट स्टोरीज आई विल हैव अनदर बुक कमिंग सून, probably in the month of October or November. I can't comment right now. But जो stories इस category में fit हो रही थी, so those are the 7 stories. The count is 7. The next page is the acknowledgements page. यहाँ पे I give a special thanks to all my friends, my readers who were critically reviewing my work. So when I say critically reviewing my work, जो लोग जो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं दे न्यू दैट आई हैव अ ब्लॉग पेज जहाँ पे मैं डेली आर्टिकल्स पब्लिश करती थी एंड देयर वर फ्यू ऑफ माय सेलेक्टेड फ्रेंड्स एंड माय क्रिटिकल रिव्यूअर्स जो मेरे काम को एनालाइज करते थे एंड दे यूज्ड टू गिव मी सजेशंस. तो दो सजेशंस हैव हेल्प्ड मी एंड दैट्स व्हाई दिस इज द आउटपुट. तो वो सजेशंस को सबको यूज़ करते हुए आई केम with my final first book. So a special thanks and I acknowledge their work that they have taken time and read those articles. Without their critical reviewing, I wouldn't have brought this.
a published book with me. Acknowledges के बाद हमारी डायरेक्टली स्टोरी स्टार्ट होती है. तो माय फर्स्ट स्टोरी इज बिकॉज इट्स अ फुल मून नाइट. टाइटल एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है, ऑब्वियसली स्टोरी भी है. उसके लिए आपको बुक परचेस करके रीड करना पड़ेगा. बट आई कैन गिव यू अ स्मॉल लिटिल ग्लिम्स ऑफ हाउ द व्हाट द स्टोरी इज. और अगर आपको ये देखना है कि कुछ भी कोई भी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली यू विल फाइंड इन दैट स्टोरी, सो देयर इज अ quote mention in the start. So every story will have a particular quote. Now each quote will give you a little glimpse of what exactly you are going to unfold in that particular story. तो इसके लिए तो फिलहाल क्योंकि ये फर्स्ट स्टोरी है तो ऑब्वियसली आई विल नॉट रीड द एंटायर बुक और द एंटायर स्टोरीज, बट आई वुड डेफिनेटली रीड one or two paragraphs for you so that you can decide whether you want to buy the book and go through all the stories or not. But I know that the content will definitely attract you and you will definitely go in the description and click on the link and place your order. Story name because it's a full moon night. Quote: it's just a matter of time to decide yes or no. Rest that follows is destiny. Darkness was engulfing in, and it was time for the moon to rise in the horizon to spread its light. It was a full moon night with the sky full of stars, but rarely visible under the blanket of moonlight. Yet it looked scary around. I started walking up the hill slowly, taking one step at a time, just being cautious of wild animals or haunted spirits to cross my way. I heard a lot of stories of a full moon night and haunted spirits. Recalling those stories gave me chills every single time. My legs were getting numb as I walked up the hill in that cold wind waves. As I walked up the hill, the temperature started to dip. The silence around was killing. I wonder if anything happens to me here at this moment, who will alert my friends who are waiting down the hill for my safe return. What will they say to my parents? I could only hear my footsteps and thoughts running on my mind. As I climbed more and more up the hill, fear was creeping in and wanted me to run away from there at that moment. But today early morning events made me stick where I was now. So as you can see, the suspense just began. Why my character was climbing the hill and why she was walking all alone on that mountain, on that hill, and why her friends were waiting and why they were not joining her, why her parents were not informed. So इन सब सवालों के जवाब आपको इसी बुक में मिलेंगे. My next story is Tough Choices. And the quote is, people will help you only when they know you. For strangers, we don't have sympathy. The quote itself says a lot. Again, to unfold the story, you need to go through the description and click on the link. The third story is The Red Blood Rose. The quote is, nothing is permanent, so why to worry? The title is little bit of suspense thriller kind of, The Red Blood Rose. In fact, red rose is a good one, but a red blood rose obviously creates question. So you need to get this book to unfold what the suspense stays or lies in this story. The next story is My Prince Charming. The quote is, blessings are falling down, make sure you collect all of them. Now, as the title says, it's a love story kind of.
So yes, it is a love story, no doubt. And what's the love story? Who is the Prince Charming? कौन है? कहाँ पे मिला? कैसा है? So वो सब पढ़ने के लिए you have to get this. My story, fifth story is Let It Go. Let It Go. The title and the quote is, they say I am the wisest. Ask me how I tolerate foolish people. I think the quote here itself is self-explanatory because there are many people whom we meet in our life and we sometimes don't, or we just sometimes cannot tolerate them. So maybe that's how the things will unfold in this particular story. अगेन अगर आपको देखना है कि क्या हुआ है कैसे हुआ है तो आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा. एंड मूविंग ऑन टू माय माय सिक्स्थ स्टोरी, जस्ट 5 minutes. So the quote goes as, work can wait, life cannot. Again a self-explanatory kind of quote जो खुद ही स्टोरी को शायद अनरिवील कर रहा है, बट हो सकता है जो आप स्टोरी सोच रहे हो वैसी स्टोरी इसमें ना हो एंड इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू का एक अलग ही स्टोरी निकल के आ जाएगी. माय सेवेंथ स्टोरी इज ट्रस्ट, जेलसी एंड बिट्रेयल. द कोट सेज, always try to be a helping hand for someone. Maybe at that moment you are the only one who cares for them. Now the title is a different one, but I can relate it to the quote. Trust, jealousy, betrayal is something where जहाँ पे friends है, जहाँ पे trust आ रहा है, loyalty है, and वहाँ पे कहीं पे तो betrayal kind of हो रहा है. तो कौन है, किससे jealousy हो रही है, कौन betray कर रहा है किसको? Again, to unfold all your questions, you have only one answer, and all the answers are there in this particular book. जैसे हम एक पर्टिकुलर नॉवेल परचेस करते हैं जहाँ पे एक स्टोरी रहता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड डिपिक्टिंग ऑल काइंड ऑफ इमोशंस. इट कैन बी फ्रेंडशिप, फैमिली, लव, हेट्रेड, जॉय, हैप्पीनेस. तो सिमिलर काइंड पे मैंने ये बुक निकाला है जहाँ पे अलग अलग स्टोरीज है बट अलग अलग इमोशंस भी. सो इफ यू आर काइंड ऑफ जहाँ पे इस दिन को सस्पेंस पसंद है, you know where to go. If you need a love story, so again it's a one single answer. Then friendship, family bonds, love, hatred, suspense, thriller, everything you'll find it under one book. Even one more highlight here, it is all the quotes that are mentioned in this particular book are purely written by me. There is no plagiarism or kind of things. It's purely written by me, and the storylines are also content wise, it is my stories. So the quotes are also mine, self written, self published. You will find a last page में है about the author, that is me. So I know it's my first book, but I have been associated with different anthology projects where I was a part as a co-author. So my work was published in that particular anthology book. So वो सारे books के बारे में लिखा हुआ है. And if you like the video or if you like my work, so you can follow me on various social media platforms. और उन social media handles का link भी यहाँ पे last page पे दिया हुआ है. You can follow me on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. और ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है. And if you want to know more about me, so there's about the author and about the book. Again, you can grab the copy, you can read it. After listening to all the titles and quotes, if the book attracts you, do grab your copy, get it, read it, get it, order it, review it, rate it. I would love to hear from you after reading. हो सकता है आपने कोट्स सुनने के बाद आपको कुछ और पिक्चराइज किया होगा स्टोरी एंड एक्चुअल में कुछ और स्टोरी निकल के आई होगी. तो यू कैन शेयर मी योर थॉट्स, योर व्यूज on my email ID. Again, the email ID is mentioned in the book as well as in the description.
I would love to hear from you. और अगर यहाँ तक आपने देख लिया है ये वीडियो and you liked it, तो नीचे एक लाइक का बटन है, you have to like it. And also, if you are new to this channel, you can subscribe it because it is all about the books. आज क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, it is my first book and that's why I thought I should dedicate it to my first book. My next video would be on self-publishing, what all problems or difficulties I faced while doing a self-publishing. So I can say I can share my piece of knowledge with you guys who are new writers and who want to do self-publishing of their book, of their work, of their written articles, poems, and stories. So what are the do's and don'ts and how I started my journey and brought this into the published books. I know I can have it on my bookshelf, and I hope that this can be on your bookshelf too. So don't wait and just grab your copy. Weekend bhi hai and it's a good weekend read also. Just grab your copy and read it fatafat se and let me know what you feel about this book, what you feel about the book cover, or if you have any suggestions for me तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू शेयर इट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर देना सो व्हेनेवर आई कम अप विथ माय न्यू वीडियो तो आपको नोटिफाई भी हो जाएगा. Also, I will try to bring my second video quickly as possible, maybe in a 1 week time, but let's see how it unfolds. And till then, happy reading. Bye.